Hello, Namaskar Mitron. Today I am going to explain the second part of isomerism, that is your stereochemistry. तो इसके अंतर्गत मैं आपको इसका दो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो मित्रों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं बाद में करूंगा, पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़िए. जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो, कंपाउंड भी एक ही होता है, अगर कंपाउंड ज्योमेट्रिकली डिफरेंट हो तो वैसी स्थिति में कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है. If the compounds are geometrically different, compounds are same, compounds are not different, but the structure of compound change such that compound get geometrically different. This is the phenomenon of geometrical isomerism. तो एक चीज आपको देखना है कि किस तरह के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. तो वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसपे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड. So the first condition to be a compound show the phenomenon of geometrical isomerism is the organic compounds have कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. चूंकि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉट शोज द फेनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नॉट शोज द फेनोमेना ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. So only the compounds having carbon carbon double bond shows the phenomena of geometrical isomerism. So one can ask you, which type of organic molecule shows the phenomena of geometrical isomerism? So you must know such organic compounds having carbon carbon double bond can show the phenomena of geometrical isomerism. But no all the carbon carbon double bond compounds. So let us see what type of compound shows the phenomena of geometrical isomerism. Not all. So condition for geometrical isomerism. So if the carbon carbon double bond compounds have all the four valency satisfied by same type of groups, then no geometrical isomerism. No geometrical isomerism. No geometrical isomerism. So this type of molecule not shows the phenomena of geometrical isomerism. Just to see the example. No geometrical isomerism. No geometrical isomerism. So the first point regarding the geometrical isomerism is that the compound having all the four surface elements are same, then such type of compound not shows the phenomenon of geometrical isomerism. Now come on to second point. If the structure is like this, if the three surface elements are same and one is different, no geometrical isomerism. No geometrical isomerism. No geometrical isomerism. Just for example, you see
no geometrical isomer. Now the third condition is that third condition, if two are same and two are different, but all these two substituent present on same carbon atom, then no geometrical isomer. No geometrical isomer. Mind it, if all two are different, these two are same, these two are different, but these two different groups present on same carbon atom, then such type of molecule not shows the phenomenon of geometrical isomer. For example, no geometrical isomer. Now, fourth condition. Fourth condition. This, if the carbon number 1, the carbon number 2, if different groups are present on different carbon atom, this Y is on 1 and this Y is on 2. This is the phenomenon of geometrical isomer. This shows the geometrical isomer. So mind it. If two different groups are present on two different carbon atoms, then this is the condition for geometrical isomerism. If, mind it, if two different groups, Y is different, X is same, but this molecule is different to the previous molecule in this context, that this Y is present on different carbon atom, carbon number 1, carbon number 2. In our third condition, these Y are present on same carbon atom, then that was not condition for the geometrical isomer. So this is the condition for the geometrical isomer. Now, in this condition, this molecule had two forms, X, Y, and Y. Now, these two are geometrical isomer. Compound A and compound B. So, the compound A and B are geometrical isomer. Why? Because this compound cannot be converted in this compound without breaking the bond. This compound A cannot be converted to compound B by breaking the bond. Without breaking the bond, if one structure be changed into other, then that is not the case of geometrical isomer. Just see here in this case. These two can be converted into each other without breaking the bond. Just for this, you will get these two compounds. So this is not phenomenon of geometrical isomerism. So this is the phenomenon of geometrical isomerism. So mind it, if two carbon atoms having different groups, two different groups, and that present on two different carbon atoms, in that condition, such compound shows the phenomenon of geometrical isomerism. So, this compound is called cis form, and this is trans form. So there are two types of geometrical isomer: cis form
and transform. Transform. So if two different groups present on the same side, same side, same side, and this on different side, opposite side, different opposite side, that is called trans. So one can ask you, how can you differentiate the cis form and trans form of geometrical isomer? Then, if the different group, there are two type of group, X and Y, two type of groups, then all these groups, the same type of group present on same side. This is in same side, X and Y. Then this is cis isomer. And when this present on, this is Y, but this Y and this Y on opposite direction. Transform. Trans means opposite. So the opposite side. So this is trans isomer. So there are two types of geometrical isomer, cis isomer and trisomer. The cis isomer are such type of organic molecules having both groups present on same side and trans in different side. Let us see different type of example here. This is cis and this is trans. This is trans. This is cis form. Dichloroethylene, 1,2-dichloroethylene. इसका नाम होगा cis 1,2-dichloroethylene. Because this chlorine is on cis side. And this is 1,2 trans 1,2-dichloroethylene. So you must know write the prefix cis and trans. If the position on same side, then add cis and this is trans. This is cis form, this is trans form. Other examples. This is cis, this is trans. Cis, this is trans. Transposition. Other example. This is choice. So, if this type of molecule will exist, then such type of isomer are known as geometrical isomer. This is very simple knowledge, very primitive knowledge. You must know the very primitive knowledge regarding the geometrical isomer. बहुत सिंपल में मैंने आपको बताया कि वही मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, लेकिन सभी नहीं, सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता है। उसका मैंने 4 कंडीशन बताया। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में all 4 substituents are same, there is no geometrical isomer. If 1 is different, 3 are same, no. If 2 are same and 2 are different, then there are 2 conditions.
जब दोनों सेम एक ही कार्बन से अटैच हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, और अगर दोनों सेम ग्रुप अगर डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, देखिए दोनों सेम ग्रुप है लेकिन डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है, डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है, डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है, तो यही कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। तो ये पक्का ध्यान रखना है। अगर दोनों सेम टाइप ऑफ ग्रुप एक साइड हो तो सीस कहलाता है, और अगर अपोजिट साइड हो तो ब्रांच कहलाता है। यही दो प्रकार के वर्गमूल होते हैं। प्राइमरी नॉलेज आपको इतना रखा है। कुछ इसे कैरेक्टर के बारे में जाने। तो केमिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट होता है, बहुत सारे केमिकल कैरेक्टर इसे बदल जाते हैं। जैसे इस कंपाउंड को हीट कीजिएगा तो आपको H2O देगा, निकल जाएगा H2O, आयन हाइड्राइड देगा। लेकिन इसको हिट कीजिएगा तो H2O दे देगा। तो ये डिफरेंट हो गया, केमिकली डिफरेंट हो गया। तो सीस और ट्रांस में अंतर है। सीस और ट्रांस में मोलिकुलर का भी अंतर, ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट का भी डिफरेंस आता है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसके डिफरेंट आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, केमिकली भी डिफरेंट आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, कंपाउंड का एडिशन डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में प्राइमरी नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन आएगा कि किस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो मैंने आपको 4 कंडीशन बताया, जिसमें केवल एक ही शो करता है। अब कितने फॉर्म में होते हैं? तो सीस और ट्रांस होते हैं। सीस कौन होगा? जब सेम साइड होगा, डिफरेंट कार्बन का ग्रुप, तो सीस हो गया, अपोजिट पे ट्रांस होगा। फिजिकल और केमिकली क्या है? तो फिजिकली और केमिकली लोग डिफरेंट होते हैं। फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर में इन लोगों का अंतर होता है। तो दिस ऑल अबाउट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मित्रों, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप इसको देखें, इसको प्रैक्टिस करें, इसको समझें, आप कैसे प्रैक्टिस करें, डिफरेंट कंपाउंड को देखें और टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन किया गया है उसको आप आंसर दें रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो प्रॉब्लम हो वो आपसे आप पूछें। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, मुझे इनकरेज करें। मैं आपको इस तरह से डेली शॉर्ट लेक्चर दिया करूँगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके लाइफ में बहुत उपयोगी होगा। मित्रों, इसको कोई पैसा नहीं लगता है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको देखें। ये प्राइमरी नॉलेज आपके लिए है। इसी नॉलेज पर आप आगे का काम कर पाएंगे। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको देखें, इसको समझें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो दिक्कत हो उस दिक्कत को आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करूंगा। आप टेक्स्ट बुक लेकर के जितने भी अभी मैंने आइसोमेरिज्म आपको बताया है उस संबंध में आप क्वेश्चन को देखें। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में जो इससे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन जरूर करें, क्वेश्चन बैंक को जरूर सोल्व करें। तो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आने वाले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, आपका ज्ञान में परिवर्तन होगा और आप अच्छे केमिस्ट्री को नॉलेज को प्राप्त करेंगे। तो मेरा लेक्चर आज इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।